Hi guys, today we are going to discuss about syllabus of paper second UPSC mathematics, mathematics optional. So this is syllabus of paper 2, which contain 250 marks, uh, which contain 8 question, in which 2 is compulsory and 5 is optional, 6 is optional. Okay, and out of 8 question you should have to attempt only 5, means only 2 question as a compulsory and 3 question as a optional. And there will be a subdivision in that, subdivision in this, like you should have to do one question which contain 4 parts or 5 parts, A B C D, like that. Okay, so paper 2 on the first one is group theory. तो आपको ग्रुप थ्योरी में क्या पढ़ना है? यू शुड हैव टू लर्न अबाउट द ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स, साइक्लिक ग्रुप्स एंड कॉसेट. कॉसेट हो गया, फिर नॉर्मल सब ग्रुप हो गया, कोसेंट ग्रुप हो गया, होमोमॉर्फिज्म हो गया, ऑटोमॉर्फिज्म हो गया, एंड permutation. This is very easy. If you have some basic knowledge, like you are expert in learning some theory, then this is easier for you. In the same manner, second one is ring theory. So what you have to learn in the ring theory, like ring, field, ideal and quotient ring, and homomorphism, and Euclidean rings, and PID is very easy, and UFD. So this is all theoretical, like what is ring, cyclic ring, field, ideal, quotient. Okay, so what I'm saying is these two are theory portion. You don't have to do some any types of calculation, like integration, calculus, differential. You don't have to use such a thing. You should have to learn, basically you should have to learn these all thing. Okay, then after a real analysis, this become very important. अगर आपको रियल एनालिसिस नहीं आता है तो आप फिर मैथमेटिक्स एज ए ऑप्शनल, यू शुड हैव टू थिंक अबाउट दैट. आपको सोचना चाहिए कि आपको लेना चाहिए या नहीं, क्योंकि दिस थ्री पोर्शन आर वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी एंड रियल थ्योरी. So what we have to say that GRR, this is very important. Group theory, ring theory and real analysis. Okay, real analysis में हमें क्या पढ़ना है? We should have to learn about the limit in the same manner, like limits, differentiation, differentiability, uniform continuous. This is important. Uniform continuity. Okay, and sequence series, this is easier, and alternative series, rearrangement of the term, Riemann integration, and uniform convergence. This is also very important. Uniform convergence. Okay, uniform convergence, basically we can say UC. What? UC, uniform convergence. Okay, so on this become very important, because from last 5 PO frequently question asked from this topic, uniform convergence. Okay, differentiation under integral sign, this is also very important. Then after you still have to learn about the numerical analysis. Numerical analysis means some basic thing, like रेगुलर फॉल्सी मेथड, RF मेथड भी बोलते हैं इसको. ओके, फिर न्यूटन रैप्सन मेथड, गॉसियन एलिमिनेशन एंड गॉस जॉर्डन मेथड, गॉस सेंडल मेथड, एंड न्यूटन्स फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इंटरपोलेशन एंड न्यूटन डिवाइडेड. दिस इज easier, quite easier. Lagrange interpolation and trapezoidal methods, and Simpson 1/3 rule and Simpson 3/8 rule. 1/3 and 3/8 rule. This becomes very important. Sometime directly ask from this two. 1/3 rule, using 1/3 rule, and solve the question by using 1/3 rule and 3/8 rule. Okay. Then Euler method. Euler method हो गया. फिर रुंगे कुत्ते method. Okay, kutta method. Runge kutta method. This is quite laughable. Okay. And Boolean algebra. Boolean algebra means you have already learned in digital electronics if you have engineering background. Okay, algorithm and flowchart, this is quite easier. Then after you should have to learn about the mechanics में क्या पढ़ना है आपको? कुछ खास नहीं. देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे, क्लास 11th में था, तो थोड़ा यहाँ पे लाइक जेई एडवांस एंड जेई मेंस के लेवल तक का होता है. ठीक है. इक्वेशन ऑफ मोशन, अल्बोर्ट प्रिंसिपल, समथिंग न्यू व्हाट यू हैव टू लर्न. अल्बोर्ट प्रिंसिपल हो गया. फिर से लेग्रांजे हो गया. लेग्रांजे तो क्वाइट ईजियर है. हैमिल्टन इक्वेशन. ओके,
So mostly question practice. Here what you have to do, QP, question practice. Okay, then after PDE, भाई साहब मान के चलिए कि आपको PDE अगर नहीं आया तो फिर आप it was quite difficult for you to crack UPSC as math as an optional, if you're going to take math as an optional, so it was quite difficult for you. So PDE में क्या पढ़ना होता है, सबसे पहले PDE का फॉर्मेशन, फर्स्ट ऑर्डर, उसके बाद ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री, ऑर्थोगोनल के बाद फर्स्ट ऑर्डर नॉन लीनियर एंड चैप्रित मैथड, डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। कॉची कैरेक्टरिस्टिक मैथड, लीनियर, PDE आ गया, ठीक है। नॉन होमोजेनस पे क्वेश्चन आते हैं, क्लासिफिकेशन, रिड्यूसिबल टू द कैनोनिकल फॉर्म, ओके, वेव इक्वेशन, हीट इक्वेशन एंड लैप्लास, ये थोड़े ईजियर हैं। इफ़ यू आर गोइंग टू प्रैक्टिस एटलीस्ट 5 क्वेश्चन फ्रॉम ईच टॉपिक, देन you can cover all these topics by solving almost 100 question, okay. Then after complex analysis भी बोल सकते हैं आसान है, अगर if you have engineering, if you have learned some engineering mathematics and some higher mathematics, then it's become quite easier for you, like analytic function, what is the analytic function, harmonic function and complex integration, Cauchy integral formula, या फिर CR भी बोलते हैं, CR formula, सिंगुलैरिटी, टेलर सीरीज, सिंगुलैरिटी में बहुत प्रकार के सिंगुलैरिटी पोल हो गया, फिर से बहुत सारी होती हैं, जैसे आपको सिंगुलैरिटी पढ़ना होगा, फिर टेलर सीरीज रेसिड्यू मेथड पढ़ना होता है, फिर कॉची प्रिंसिपल रेसिड्यू मेथड, ठीक है। उसके बाद काउंटर इंटीग्रेशन जो आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है, काउंटर इंटीग्रेशन, कन्फॉर्मल, ओके। देन आफ्टर बेसिकली यही आपका सिलेबस है मैथमेटिक्स का सेकंड का। हाँ, फ्लूइड डायनामिक्स थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है अगर आपने फ्लूइड के बारे में या फिर डायनामिक्स के बारे में अगर आपको नॉलेज ना हो, क्योंकि काइनेमेटिक्स इसमें डायरेक्टली आ जाता है। स्ट्रीम लाइन हो गया, फिर स्ट्रोक्स हो गया, फिर स्टीम लाइंस एंड इक्वेशन ऑफ यूलर इक्वेशन हो गया, मोशन इन टू दी सिंक और सोर्स हो गया, ओके। एसिमेट्रिक मोशन हो गया, वोर्टेक्स मोशन एंड नेविक स्टोक इक्वेशन डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। यूलर इक्वेशन डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, और क्वेश्चन आते हैं 20 मार्क्स, 1 क्वेश्चन 20 मार्क्स। अगर आपको आता है तो यू कैन गेट वेरी इजली, ओके, अदरवाइज इट्स क्रिएट प्रॉब्लम फॉर यू। सो बेसिकली देखो, यही आपका सिलेबस है पेपर सेकंड का। तो ओवरऑल आपका ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी एंड रियल एनालिसिस जो आपका थ्योरी है, बेसिकली क्या मैं बोल रहा हूँ, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो ये 3 पोर्शन है ये आपका थ्योरी है, ठीक है। और ये आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस, यहाँ से आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा न्यूमेरिकल एनालिसिस पे, ठीक है। लीनियर प्रोग्रामिंग थ्योरी मीन्स थोड़ा बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। PD टोटली क्वेश्चन प्रैक्टिस, एंड मैकेनिक्स एंड फ्लूइड दिस आल्सो कंटेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस, ओके। एंड कॉम्प्लेक्स में भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस बोल सकते हो। तो बेसिकली आपको आधा पोर्शन तो एज ए थ्योरी मिल जाएगा, एंड सम पोर्शन दैट विल बी क्वेश्चन प्रैक्टिस। So quite easier if you if you are from engineering background or you have prepared for JEE Mains and JEE Advanced in your past year. Okay, so thank you.